Morning everyone. So after 2-3 days again we are here with English class. So our one sound is left. That sound is EX. EX. X. Okay, let's start. Our first word is this number 6. S-E-X, 6. How to write that? See, this number is 6. Okay? Before X, what we will write here? S. S-E-X, 6. S-E-X, 6. Our next, this is the glass of milk. Milk है ना? Daily in the morning have one glass of milk. Okay. And what the mama put in this milk? Mama put sugar. Sugar in the mix in the milk like this. Sometime mama makes Bournvita and sometime mama makes some flavors in the milk. Is that? Yes. This is mix. Mix it well. Okay, how to write mix? Before X, we will write here Ma. E-X, mix. Our next word is fix. See, I have this racket, but this is a mosquito killer racket. Mosquitoes आ जाती हैं तो we on this from this red buttons. ये देखिए रेड बटन से ऑन करते हैं. After that we do like this and kill the mosquitoes. And see, there are so many screws are here. See, and this screw is very loose. So I have this nail or screw, whatever is it, and this screwdriver पेचकस होता है. So I will fix कर रही है मैम screw in this racket. And sometimes we fix the washing machine there. That is called fix. Okay, how to write fix? See, before X, we will write F. E-X, 6. Again we will repeat E-X, 6. E-X, mix. E-X, 6. Now we have completed our all the sounds. Okay, we have completed I की सभी words हमने complete कर लिए. N, it, if, X. So let's revise in our assignment. Because we will work in our assignment. Look at the picture and write the words. And you all know what picture is this? This picture is babes. Who use the babe? Small kids use the babe. How to write babe? Babe. Okay. And what picture is this? This is the lid. Lid, any type of lid.
आपका टिफिन का जो कवर होता है, ऊपर का ढक्कन होता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लिड। पतीले का ढक्कन होता है, वो भी लिड बोलते हैं, उसको भी लिड बोलते हैं। और हम कई बार उसके ऊपर बाउल के ऊपर लिड रख देते हैं, इस ढक्कन को कहते हैं लिड। ल ई ड, writing should be very neat. Okay, see. Okay, and this is the nib of the pen. आपको बोला था nib होती है, this portion is called nib. How to write nib? N E B nib. All of you must take care about it कि while writing you must repeat the sounds. साउंड्स बोले बिना कोई भी नहीं लिखेगा, मस्ट रिपीट द साउंड्स। एंड दिस पिक्चर इज bin. And what is the use of bin? We throw the garbage in the bin. B E N bin. See, there is a lid on the bin. ये bin जो है उसके ऊपर भी एक lid लगा हुआ है, ढक्कन लगा हुआ है, that is called lid. And what is this? This is smiling lip. L E P lip. And what this boy is doing? He is digging the mud. वो खोद रहा है, खोदने को बोलते हैं dig. किस मिट्टी खोदने को बोलते हैं dig. D E G dig. Writing should be very neat. This is kid. छोटा बेबी है ना, छोटे बेबी को क्या कहते हैं? Kid. And here you must take care. What that? That is kid के लिए which letter we will use? We will use K for the kid. K. क की साउंड, सी की साउंड भी क होती है एंड के की साउंड भी क होती है। फॉर किड वी विल यूज के। क ई ड किड। जब बार बार अगेन एंड अगेन यू विल रिपीट इट तो आपको इजीली आ जाएगा। बार बार रिवीजन करने से आप जल्दी से सीख जाएंगे कि किड में ऑलवेज पुट हियर के। ओके, दिस इज लिट। ये जो मोमबत्ती का दिस पोर्शन इज कॉल्ड लिट। ल ई ट लिट, पुट द डॉट। एंड व्हाट इज दिस इज फिग। अंजीर होता है, आई टोल्ड यू मस्ट हैव दिस, इट इंक्रीज योर हीमोग्लोबिन। फ ई ग fig. Fig is a fruit. This is very less work. ये तो बहुत कम काम है। तो let's do few more words on the next page. What is this? This is pig. P E G pig. But don't forget to write P like this. हाफ प ऊपर, हाफ प विल कम डाउन ऑन दिस लाइन। जो लाइन ड्रॉज हैं उसके हाफ प ऊपर, हाफ प नीचे, हाफ जी ग ऊपर, हाफ ग नीचे। एंड दिस इज पेन। व्हाट इज दिस? पेन। एंड दिस इज आल्सो अ पेन। इज दैट? दिस इज सेफ्टी पेन and this is all pen. P, again P, you will write like this. P E N pen. And what is this? Tin of ghee, oil. कुछ भी हो सकता है इस टिन के अंदर। T E N tin. Before in we will put T. This is zip. Z E P zip. And this is the tip. पेंसिल की क्या है? I will show some clear picture to you.
ठीक है, आई ड्रॉ दिस पेंसिल हियर, और पेंसिल की ये पॉइंट जो है दिस इज कॉल्ड टिप. ट ई अगेन प, हाफ ऊपर हाफ नीचे, ट ई प टिप. And this boy is sitting on the chair. Sit. Sit. While writing, you must repeat again and again. And this is wig. मैंने सबको दिखाया था wig पहन के. Okay, remember that. W. W says W. W-E-G. Wig. And this number is 6. Just now I teach you this word. S-E-X. 6. See, we have completed 2 pages today. So, do this work and send that work to your teachers. Again, we will meet tomorrow with new class. Till then, bye. Revise all the work. I sound, O sound and A sound. Till then, bye.